Assalamu alaikum to everyone. Welcome to our official YouTube channel that is named as Learning of English Language. First of all, I'd like to request all of you guys to like, subscribe and share our official YouTube channel with your dear and near ones. Let's start our today's topic and that is present perfect tense. Let's see its identification. That is वो तमाम sentences या stances जिनकी ending चुका है, चुकी है या फिर चुका हूँ वगैरह पे होती है वो तमाम स्टांसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कहलाते हैं। अगर हम इसके यूजेज की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टेल्स करता है अबाउट एन एक्शन विच हैज़ कंप्लीटेड इन नियर पास्ट और इट आल्सो शोज अ लिंक बिटवीन प्रेजेंट और पास्ट। अगर हम इसके ऑक्सिलरी वर्ब्स की बात करें तो बेसिकली इट हैज़ ओनली टू ऑक्सिलरी वर्ब्स। फर्स्ट वन इज़ हैज़ एंड सेकेंड वन इज़ हैव। हैज़ की बात करें तो हैज़ जो है ऑलवेज यूज विद ए सिंगुलर सब्जेक्ट लाइक ही शी it. Or if we talks about the second auxiliary verb of present perfect tense and that is have, तो have जो हमेशा यूज होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लाइक आई, वी, यू एंड देन कम्स दे। अगर हम इसके फॉर्म ऑफ वर्ब्स की बात करें तो फॉर्म ऑफ वर्ब इसकी थर्ड होती है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है इन ऑल टाइप ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेट्स सी फॉर्मूला फॉर द सिंपल सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड दैट इज सब्जेक्ट plus has or have plus third form of verb with object. Let's see some of the examples and that is मैं स्कूल जा चुका हूँ I have gone to school. Now you can clearly see that we use third form of verb after the auxiliary verb have with a plural subject and same is the case with rest of the stances like हम उछल चुके हैं we have jumped. तुम मेरा वक्त ज़ाया कर चुके हो you have wasted my time. वो गाना गा चुका है ही हैज़ संग अ सॉन्ग। बारिश हो चुकी है इट हैज़ रेन्ड। नेक्स्ट हमारा आता है नेगेटिव सेंटेंस जस्ट एडिशन ऑफ नॉट आफ्टर ऑक्सिलरी वर्ब वी गेट ए फार्मूला फॉर द नेगेटिव सेंटेंसेस। लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस एंड दैट इज मैं जिम नहीं जा चुका हूँ आई हैव नॉट गॉन टू जिम। हम खेल नहीं चुके वी हैव नॉट प्लेड। तुम लिख नहीं चुके यू हैव नॉट रिटन। वो गाना नहीं गा चुका है ही हैज़ नॉट संग अ सॉन्ग। बारिश नहीं हो चुकी है इट हैज़ नॉट रेन। लेट्स सी interrogative sentences of present perfect tense. Like I already told you guys in a previous lectures that इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हमारी आस्किंग को और हमारे क्वेश्चनिंग को डील करते हैं। लेट्स सी फार्मूला हैज़ है प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विद ऑब्जेक्ट। लाइक ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वी यूज ऑक्सिलरी वर्ब बिफोर सब्जेक्ट। लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल्स एंड दैट इज क्या वो जिम जा चुका है हैज़ ही गॉन टू जिम। क्या हम खेल चुके हैं हैव वी प्लेड एंड सेम इज़ द केस विद रेस्ट ऑफ द स्टांसेस। If you liked our video, then kindly show your feelings in our comment section. I'll really appreciate your feelings, your thoughts. One more thing that I'd like to request all of you guys that kindly share our official YouTube channel that is named as Learning of English Language with your dear and near ones. Thanks for watching. Thank you. Allah Hafiz.